हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग बेसिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड पढ़ने वाले हैं और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेडियोलॉजी का नया पार्ट अल्ट्रासाउंड का। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो पूरा अभी हम लोग बेसिक्स से लेके एडवांस तक अल्ट्रासाउंड की स्टडी करेंगे। ओके, सो दीज आर आवर टॉपिक्स: generators, modes, Doppler, wave propagation, focusing, attenuation, amplification, boundaries, transducers, etc. And now let's see what is ultrasound. So as we know that ultrasound is the name given to high frequency sounds. Ultrasound is just high frequency sound waves over 20,000 cycles per second, means 20 kilohertz. These waves inaudible to humans. These waves are inaudible. We cannot listen these waves and can be transmitted in beams and are used to scan the tissues of the body. And these are used to scan the tissues of the body. हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को स्कैन करने के लिए यूज़ होती हैं। इनको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। एंड इनकी स्पीड 20,000 साइकिल पर सेकेंड और 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर होती है। दीज आर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स। ओके, and ultrasound pulses of the type produced by the scanners described here are a frequency from 2 to 10 megahertz. एंड जो अल्ट्रासाउंड पल्सेस के टाइप प्रोड्यूस्ड होते हैं स्कैनर से डिस्क्राइब्ड होते हैं, ये होते हैं 2 to 10 मेगाहर्ट्ज, 2 से 10 मेगाहर्ट्ज तक ये हो सकते हैं। एंड 1 मेगाहर्ट्ज क्या होता है? 10 लाख साइकिल्स पर सेकेंड। इसमें 10 लाख साइकिल्स पर सेकेंड होते हैं। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स इज अबाउट 1 माइक्रोसेकेंड। एंड इन दिस पल्स ड्यूरेशन कितना होता है? 1 माइक्रोसेकेंड, ए मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 माइक्रोसेकेंड में हम 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज तक साउंड वेव्स की स्पीड को दे सकते हैं, पल्सेस को कर सकते हैं यूज। एंड द पल्सेस आर रिपीटेड अबाउट 1000 टाइम्स पर सेकेंड। एंड दीज पल्सेस आर रिपीटेड अबाउट 1000 टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में हम लोग 1000 टाइम्स इनको रिपीट्स कर सकते हैं। ऑडिबल साउंड होती है 20 किलो हर्ट्ज तक। एंड जो अल्ट्रासाउंड में हम लोग यूज़ करते हैं 2 to 10 मेगा हर्ट्ज तक। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासाउंड इज़ मैनी टाइम्स ग्रेटर देन द ऑडिबल साउंड। जो अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी होती है वो मैनी टाइम्स ग्रेटर होती है देन द अल्ट्रासाउंड। This is why we cannot listen ultrasound waves. And different tissues alter the waves in different ways. जो different tissues होते हैं बॉडी के, उनका वेव्स के लिए भी अलग अलग टाइप होता है। किसी में कम वेव्स जाने पे ही हमें उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ जो डीपर टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए हाई वेव्स की रिक्वायरमेंट होती है, हाई इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी की। सम रिफ्लेक्ट डायरेक्टली वाइल अदर्स स्कैटर। कुछ रिफ्लेक्ट कर जाती हैं डायरेक्ट, जबकि कुछ स्कैटर्ड होती हैं। एंड द वेव्स बिफोर दे रिटर्न टू द ट्रांसड्यूसर एज इकोज। जो जब वो वेव्स को ट्रांसड्यूसर से डालो तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं डायरेक्टली एंड कुछ स्कैटर्ड हो जाती हैं, जबकि हम लोग ट्रांसड्यूसर से वेव्स डालते हैं एंड दे रिटर्न एज इकोज, यानी कि साउंड के फॉर्म में दे रिटर्न करती हैं। एंड द वेव्स
पास थ्रू द टिश्यूज एट डिफरेंट स्पीड्स। जो वेव्स हैं जो पास करती हैं फ्रॉम द टिश्यूज एट डिफरेंट स्पीड्स, फॉर एग्जांपल 1540 मीटर्स पर सेकेंड थ्रू सॉफ्ट टिश्यूज। जो वेव्स हैं ये टिश्यूज की थिकनेस और उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड से उसको पास कर रही हैं। जैसे सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए होती है इसकी स्पीड 1540 मीटर्स पर सेकेंड, and the reflected ultrasound pulse detected by the transducer need to be amplified in the scanner। जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड पल्सेज होती हैं डिटेक्टेड बाय द अल्ट्रासाउंड के द्वारा, उनके लिए एम्प्लीफाइड होना ज़रूरी है in the scanner। The echoes that come from deep within the body are more attenuated than those from the more superficial parts। जो इको साउंड्स होती हैं दैट कम फ्रॉम डीप विद इन द बॉडी, जो कि डीप विद बॉडी टिश्यूज से आती हैं इकोज यानी कि साउंड, आर मोर अटेन्यूएटेड, वो मोर अटेन्यूएटेड होती हैं। मोर अटेन्यूएटेड मीन्स जब उसमें एक छीड़ता होती कमी हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी में, देन दोज फ्रॉम द मोर सुपरफिशियल पार्ट्स, जब बॉडी की सुपरफिशियल पार्ट्स में होंगे तो लेस एटेन्यूएटेड रहती है। एंड देयरफॉर रिक्वायर मोर एम्प्लीफिकेशन, इसके लिए उसके मोर एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत होती है। अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स हैव कंट्रोल्स दैट कैन अल्टर द ओवरऑल सेंसिटिविटी। अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स में कंट्रोल होता है जो कि ओवरऑल सेंसिटिविटी को अल्टर कर सकता है। द थ्रेशोल्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के थ्रेशोल्ड को अल्टर कर सकता है, एज वेल एज चेंज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द इकोज फ्रॉम डिफरेंट डेप्थ्स। एंड ये जो डिफरेंट डेप्थ्स की एम्प्लीफिकेशन है, एम्प्लीफिकेशन से इकोज आती हैं, साउंड आती हैं, उसको भी चेंज कर सकता है। व्हेन वर्किंग विथ एनी स्कैनर इट इज़ नेसेसरी टू अचीव ए बैलेंस्ड इमेज, वन दैट कंटेन्स इकोज। जब हम लोग वर्क करते हैं विद एनी स्कैनर इट इज़ नेसेसरी टू अचीव ए बैलेंस्ड इमेज, एक बैलेंस इमेज पाने के लिए वन दैट कंटेन्स इकोज, जो एक जो कंटेन करता है इकोज को, साउंड को, ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल स्ट्रेंथ, जो कि बराबर स्ट्रेंथ के, फ्रॉम ऑल डेप्थ्स ऑफ टिश्यू, सभी डेप्थ के टिश्यूज से इसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। एंड व्हेन द इकोज रिटर्न टू द ट्रांसड्यूसर, जब इकोज ट्रांसड्यूसर की तरफ रिटर्न होती हैं, इट इज़ पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट ए टू डिमेंशनल मैप, तब ये पॉसिबल होता है टू रिकन्स्ट्रक्ट ए टू डिमेंशनल मैप of all the tissues that he have been in the beams, सभी टिश्यूज़ का जो कि वो बीम्स में लिया है। एंड द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर एंड डिस्प्लेड ऑन ए वीडियो टेलीविज़न मॉनिटर, और फिर उससे जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है कंप्यूटर में, जिसको हम लोग डिस्प्ले में देखते हैं, वीडियो में जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है मॉनिटर में हम लोग उसको देखते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग इकोज आर सेड टू बी ऑफ हाई इंटेंसिटी, जो स्ट्रॉन्ग इकोज होते हैं उनको हम लोग हाई इंटेंसिटी का इकोज बोलते हैं। एंड अपीयर एज ब्राइटर डॉट्स ऑन द स्क्रीन, और ये ब्राइटर डॉट्स के फॉर्म में स्क्रीन में दिखते हैं। Here we can see in this image that this is our patient and these are high frequency pulses. This is transducer, we are doing ultrasound, and
these waves are coming into the body, and these will reflect and goes echo to the transducer, and from here this will go to the our computer and shows the details of the tissues, deeper or superficial, all the tissues. And this is our computer. Here the information would be stored, and this is our monitor where we can see the information what is inside the tissues. Okay, and this manual refers only to ultrasound used for medical diagnosis and not to ultrasound used for other purposes. These require quite different equipment. ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मैनुअल स्पेशली अल्ट्रासाउंड मेडिकल डायग्नोसिस के लिए है, नॉट अल्ट्रासाउंड यूज फॉर अदर पर्पसेस. दीज रिक्वायर क्वाइट डिफरेंट इक्विपमेंट. एंड ultrasound generators. The ultrasound waves are generated by a piezoelectric transducer which is capable of changing electrical signals into the mechanical ultrasound waves. जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं ये जनरेट होती हैं बाय ए फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से विच इज़ कैपेबल ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को चेंज करने में कैपेबल होता है इनटू मैकेनिकल यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स में. द सेम ट्रांसड्यूसर कैन ऑल्सो रिसीव द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड एंड चेंज इट बैक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. एंड जो सेम ट्रांसड्यूसर होता है कैन ऑल्सो रिसीव द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड एंड चेंज इट बैक इनटू electrical signals. Transducers are both transmitters and receivers of ultrasound. और जो ये ट्रांसड्यूसर्स होते हैं ये दोनों का काम करते हैं, ट्रांसमीटर्स का भी. इनसे हम जो यूएसबी वेव्स होती हैं डालते भी हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं इससे हम लोग यूएसबी वेव्स को. सो here is this. And different modes of ultrasound. The various modes show the returning echoes in different ways. जो various modes होते हैं उससे जो रिटर्निंग इकोज होते हैं वो डिफरेंट वेज में होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे अभी. सो हेयर इज ए मोड. ए मोड क्या है? विथ दिस टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड यूनिट द इकोज आर शोन एज peaks and the distances between the various structures can be measured. जो A mode होता है इससे with the type of ultrasound, with this type of ultrasound unit and the echoes are shown as peaks. तो जो echoes होते हैं ये as a peaks के तौर पे दिखाई देते हैं and the distances between the various structures can be measured. जो वेरियस स्ट्रक्चर्स के बीच में डिस्टेंसेस होती हैं इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं. एंड दिस पैटर्न इज नॉट यूजुअली डिस्प्लेड बट सिमिलर इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू बिल्ड द टू डिमेंशनल बी मोड इमेज. ये जो पैटर्न है जनरली डिस्प्लेड नहीं होता है बट सिमिलर इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है यूज की जाती है टू बिल्ड द टू डिमेंशनल बी मोड इमेज. जो ए मोड इमेज है इसमें मेनली हम लोग पीक्स देख सकते हैं. हियर वी कैन सी दिस. लेट्स सी ए मोड स्कैन एंड this is the depth and echo of strength. This is depth and these are peaks of echoes of strength. Okay, so this is how it is. And here is the mode scans. The position of the peaks shows
The depth of the reflecting structure and the height indicates the strength of the echoes. Here we can see the peaks and echoes. These are the okay. This is echo for skull, echoes for near from skull, A mode echoes, and here we can see A mode beam line, and this is the B fetal skull. Okay, so this is how it is. This is used to reconstruct 2D means B mode two-dimensional images. So here is two-dimensional. Let's see what is this. So B mode, this type of image shows all tissues transversed by the ultrasound scans. ये दिखाता है tissues transversed by the ultrasound, all the tissues, and the images are two-dimensional and are known as B mode images or B mode sections. Here we can see two-dimensional or B mode images. So this is why this is known as B mode ultrasound. If multiple B mode images are watched in rapid sequences, अगर हम लोग मल्टीपल बी मोड इमेजेस देख सकते हैं इन रैपिड सीक्वेंस, दे बिकम रियल टाइम इमेजेस. तो ये रियल टाइम इमेजेस बन जाती हैं. एंड हियर वी कैन सी बी मोड मल्टीपल इमेजेस, and this is how here it is. B mode scan, the echoes are seen as bright dots. The position of the reflecting structure on a two-dimensional image. Here we can see endometrial cavity. This is our endometrial cavity, and this is the uterus, and here it is bladder. So B mode is basically for two-dimensional images. And now real-time images. Real time, this mode displays motion by showing the images of the part of the body under the transducer as it is being scanned. जब जैसे ये स्कैंड होता रहता है रियल टाइम जब इमेजेस बनती हैं, जब बी टाइम अभी आप लोगों ने देखा कि बी मोड की जो इमेजेस हैं जब रैपिड इमेजेस लेते हैं हम लोग तो उसमें रियल टाइम इमेजेस बनती हैं. एंड द इमेजेस चेंज विथ each movement of the transducer. The images change with the each movement. जैसे जैसे हमारी मूवमेंट ट्रांसड्यूसर की चेंज होती है वैसे वैसे इमेज की मूवमेंट इमेज भी चेंज होती है. और इफ़ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूविंग, फॉर एग्जांपल ए मूविंग फीटस और पल्सेटिंग आर्टरी, जब जैसे कि हम लोग एक फीटस को देख रहे हैं मूविंग और पल्सेटिंग आर्टरी को देख रहे हैं, तो जैसे जैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे हमारे मॉनिटर में चेंजेस शो हो रहे हैं, तो इसको हम लोग रियल टाइम बोलते हैं. द मूवमेंट इज शोन ऑन द मॉनिटर इज इन रियल टाइम एज इट अकर्स. In most real-time units, it is possible to freeze the displayed image. इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि उस इमेज को फ्रीज किया जा सके जो यूनिट्स होती हैं रियल टाइम्स, एंड होल्डिंग इट स्टेशनरी सो दैट इट कैन बी स्टडीड एंड मेजर्ड इफ़ नेसेसरी. इसको फ्रीज हम लोग इसलिए करते हैं सो दैट हम लोग इसको स्टडी कर सकें एंड उसमें अगर कुछ हमें मेज़र करना है कुछ देखना है तो वो हम देख सकें. ओके, एंड नाउ एम मोड. सो एम मोड इज़ अनदर वे ऑफ डिस्प्लेइंग मोशन. एम मोड एक दूसरा तरीका है मोशन को डिस्प्ले करने के लिए, एंड द रिजल्ट इज़ ए वेवी लाइन. इसमें एक वेवी लाइन दिखाई देती है. दिस मोड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कार्डियक ultrasound, and this mode is
किसके लिए यूज होता है? कार्डियक अल्ट्रासाउंड्स के लिए यूज होता है एम मोड. So let's see what is our M mode ultrasound. This is how it looks. First let's see here. This is the patient's skin. This is the patient's skin and moving structure. This is heart and this is our transducer. And now M mode images are forming. So here M wave types, moving waves would be formed, and this is used in the cardiac ultrasound. And let's see, M mode scans the movement of a part of the body, such as the fetal heart is shown a function of time. Here we can see this is here this image is explained here. This is the fetal heart. This image is the fetal heart, and this is the fetal chest, and here is the placenta and B mode images. And here we can see this is the M mode beam line of sight, and here this is the M mode ultrasound. So by this we can see heart of fetus or adult too. And here we can see M mode scan of the aorta. This is the M mode scan of the aorta, and here we can see this is the time and M mode sequences waves, and in this B mode images we can see this is the aorta. So this is the difference between B mode and M mode. Okay, now let's see what is Doppler ultrasound. And the electronic circuits for Doppler ultrasound are not included in the general purpose ultrasound specification. जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर अ डॉपलर अल्ट्रासाउंड होती हैं, ये नहीं इंक्लूडेड होती हैं जनरल पर्पज अल्ट्रासाउंड स्पेसिफिकेशंस में. दे कैन बी ऑब्टेन्ड एज एन इनएक्सपेंसिव सेपरेट यूनिट. ये ऑब्टेन की जा सकती हैं एज ए इनएक्सपेंसिव, या जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं वो जो यूनिट्स होती हैं वो कंपैरेटिवली चीप होती हैं, सस्ती होती है उनके कंपैरेटिव. वाइल वी आर डूइंग डॉपलर, these are costly comparing to the normal ultrasound units. But before deciding to do so, read this section and consider whether the purchase can be justified by the number of the patients with treatable vascular disease who are likely to benefit. बट जब हम लोग ये डिसाइड करते हैं ताकि पेशेंट को देखना है, जिससे कि वैस्कुलर डिसीज़ को चेक करना है, तो फिर हमें ये करना पड़ता है. डू यू नीड डॉपलर? रीड कंसीडर केयरफुली, इज द एक्सपेंस जस्टिफाइड? क्या जो डॉपलर की ज़रूरत है, क्या इतना हमें एक्सपेंस करना, खर्चा करना जस्टिफाइड है? तो ये अभी हम लोग देखते हैं. द डॉपलर इफेक्ट. व्हेन अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स ए स्टेशनरी रिफ्लेक्टर, द रिफ्लेक्टेड वेव्स echoes will be the same frequency as those originally transmitted. जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो ट्रांसमिटेड वेव्स होती हैं टुवर्ड्स स्टेशनरी रिफ्लेक्टर, द रिफ्लेक्टेड वेव्स जो इकोज होती हैं विल बी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज दोज ओरिजिनली ट्रांसमिटेड. जितना हम लोग ट्रांसमिटेड ओरिजिनली करते थे वैसे ही ट्रांसमिटेड होती हैं. हाउएवर, इफ द रिफ्लेक्टर इज मूविंग टुवर्ड्स द ट्रांसमिटर, द
reflected frequencies will be higher than the transmitted frequency। तो इसमें जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये हायर होती हैं देन द ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं उससे रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। एंड कन्वर्सली इफ़ द रिफ्लेक्टर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रांसमीटर, इसमें जो रिफ्लेक्टर होता है जो मूव करता है अवे फ्रॉम द ट्रांसमीटर, द रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर देन द ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। तो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है देन द ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। तो इस वजह से हम लोग डॉपलर इफ़ेक्ट को यूज करते हैं। And here in this image we can see stationary. This is the stationary and this is the waves are going towards the tissues and coming with the same frequency towards the transducer and moving closer. Where we go closer to the tissues, then this frequency would go through the body and this frequency would be back to the transducer and moving away. When we will go away from the tissues and this frequency would go to the body and this would lower and the frequency would be lower while this will come to the receiver, and the difference between the transmitted and received frequency is proportional to the speed with जो difference होता है with the transmitted and received frequency is proportional to the speed which the reflector is moving away from or approaching the transmitter, जिससे कि वो हम लोग मूविंग अवे कर रहे हैं और अप्रोच कर रहे हैं ट्रांसमीटर को। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड द डॉपलर इफ़ेक्ट। ये फिनोमिना जो है डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज इज़ कॉल्ड द डॉपलर शिफ्ट। जो फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर शिफ्ट। एंड डॉपलर इफ़ेक्ट क्या है, जो डिफरेंस होता है ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसीज के और रिसीव्ड फ्रीक्वेंसीज में प्रोपोर्शनल होती हैं टू द स्पीड। लेट्स सी, वेट अ मिनट, लेट मी राइट हेयर। डिफरेंस बिटवीन the transmitted and received frequency, transmitted frequency and the received frequency is the proportional to the speed which the reflector is moving away from the approaching the transmitter, जिससे कि रिफ्लेक्टर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द ट्रांसमीटर। Movement towards the transducer increases the reflected frequency। जो मूवमेंट होती है towards the transducer बढ़ती है the reflected frequency, increases the बढ़ाती है रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी को। जो मूवमेंट टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर, अगर ट्रांसड्यूसर की तरह मूवमेंट करेंगे तो ये क्या बढ़ाती है, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। And now clinical applications of Doppler units. Why we are using Doppler while this is not of such use? So, although an inexpensive Doppler unit can be used to detect fetal heart motion, वैसे तो एक inexpensive Doppler unit can be used to डिटेक्ट फीटल हार्ट मोशन, उससे हम लोग फीटल हार्ट मोशन देख सकते हैं। इट इज़ सीन बेटर बाय रियल टाइम अल्ट्रासाउंड, इससे हम लोग रियल टाइम अल्ट्रासाउंड से बेटर देख सकते हैं। डॉपलर
can be used to demonstrate blood flow in the peripheral vessels of the adults. इससे हम लोग एडल्ट्स में पेरिफेरल वेसल्स में ब्लड फ्लो को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए देखते हैं. बट इन मैनी कंट्रीज the number of patients requiring this examination will be relatively few. The additional expense cannot be justified as parts of a general purpose ultrasound units. But इसके कई सारी कंट्रीज़ में पेशेंट्स काफ़ी कम है, तो इसके जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं कैन नॉट बी जस्टिफाइड एज पार्ट ऑफ ए जनरल पर्पज अल्ट्रासाउंड. तो इसका जो एक्सपेंस है उसको करना वहाँ के लिए सही नहीं रहता है. सो द डॉपलर इफेक्ट मेक्स इट possible to detect and measure the rate of movement of any fluid such as blood. डॉपलर इफेक्ट से हम लोग पॉसिबल कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं, मेजर द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी फ्लूइड, जैसे कि ब्लड हो गया. इन ब्लड द मूविंग रिफ्लेक्टर्स आर द आरबीसीज. जो ब्लड में मूविंग रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो आरबीसीज होते हैं. टू मेजर दिस मूवमेंट देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूनिट. और जो ये मूवमेंट है इसको मेज़र करने के लिए यहाँ पे दो बेसिक टाइप की अल्ट्रासाउंड यूनिट्स होती हैं. द कंटिन्यूअस वेव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंटिन्यूअस वेव्स and the second is the pulse waves. There's two types of ultrasound Doppler units, the continuous waves and the pulse units. So let's see what is continuous wave Doppler unit. The ultrasound is continuous and the unit measures high velocities accurately. जो अल्ट्रासाउंड यूनिट कंटिन्यूस वेव डॉपलर होता है ये मेज़र करती है हाई वेलोसिटीज़ एक्यूरेटली, हाई वेलोसिटीज़ को एक्यूरेटली. बट देयर इज़ नो डेप्थ रिजोल्यूशन, बट उसमें कोई भी डेप्थ रिजोल्यूशन नहीं होता है. सो दैट ऑल द मूवमेंट अलॉन्ग द अल्ट्रासाउंड, जिससे कि ऑल द मूवमेंट्स जो कि अल्ट्रासाउंड के साथ होती हैं, बीम इज शोन टुगेदर. अल्ट्रासाउंड बीम के साथ जो भी मूवमेंट्स होती हैं वो टुगेदर एक साथ दिखाई देती हैं. इन ए पल्स वेव डॉपलर यूनिट द अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड इन पल्सेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इनटू द बॉडी. जो पल्स वेव यूनिट्स होती हैं इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स पल्सेज अल्ट्रासाउंड की बॉडी में ट्रांसमिट की जाती हैं विद गुड डेप्थ रिजोल्यूशन, अच्छी डेप्थ रिजोल्यूशन के साथ. इट कैन बी एम्ड डायरेक्टली टू मेजर द स्पीड ऑफ द ब्लड इन ए पर्टिकुलर वेसल. ये इससे डायरेक्टली स्पीड ऑफ द ब्लड इन ए पर्टिकुलर वेसल को मेजर किया जा सकता है. द डिसएडवांटेज इज दैट इट कैन नॉट measure high blood velocities in deep vessels and high velocities. इसका जो डिसएडवांटेज है ये हाई ब्लड वेलोसिटीज़ को डीप वेसल्स में एंड हाई वेलोसिटीज़ को मेजर नहीं कर सकता. एंड हाई वेलोसिटीज़ में भी रॉन्गली डिस्प्लेड एज लो वेलोसिटी, और जो कि डीप टिश्यूज़ में होती हैं हाई वेलोसिटीज़ उसको ये wrongly display भी कर सकता है एज लो velocities. ओके, aliasing, this is known as aliasing. So pulse doppler can be showing the flow of blood just above the bifurcation of the aorta. जो पल्स डॉपलर होता है ये कैन शो कर सकता है फ्लो ऑफ द ब्लड जस्ट अबव द bifurcation of the aorta. Here we can see systolic and diastolic differences, and this is the time between that, and these are the velocities. So
दिस इज द डॉपलर अलाइजिंग। डॉपलर अलाइजिंग क्या है? द पीक ऑफ ईच वेव इज शोन below the line at the bottom, indicating negative flow. These aliasing artifacts occur when the pulse repetition rate of the unit is not sufficiently high to measure the high velocity of the reflecting structure. So जो ये होता है डॉपलर अलाइजिंग, इसमें यही होता है कि जो डीप टिश्यूज में हो रहा है, तो दिस कैन बी सो एज these are low velocities. So yeah, we can see Doppler spectrum. The top of tracing is cut off here. This is the Doppler spectrum and top is cut off, and this is the baseline and analyzed portion is this is cut off, the top displayed at the bottom, so this is how it is. In a color Doppler unit, a further development on the waves in a color Doppler unit, a further development on the above principles, the distribution and the direction of the flowing blood are shown as two-dimensional images in which the velocities are distinguished by different colors. When we are doing color Doppler, सो जो हम लोग ने ऊपर अभी प्रिंसिपल्स पढ़े उसमें से द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग ब्लड्स जो होती है वो शोन एज अ टू डिमेंशनल इमेज इन विच द वेलोसिटीज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय डिफरेंट कलर्स। जो वेलोसिटीज़ हैं उनको हम लोग डिफरेंट कलर्स के हिसाब से देखते हैं। इन अ डिप्लेक्स डॉपलर सिस्टम, a blood vessel is located by B-mode ultrasound imaging, and then the blood flow is measured by Doppler ultrasound. जब डुप्लेक्स डॉपलर सिस्टम होता है, एक ब्लड वेसल लोकेटेड होती है बाय बी मोड अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, एंड देन ब्लड फ्लो मेजर किया जाता है बाय डॉपलर अल्ट्रासाउंड. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी मोड and Doppler system allows the Doppler beam to be directed more accurately at any particular blood vessel. तो ये जो बी मोड और डॉपलर सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन अलाउ करता है डॉपलर बीम को डायरेक्टेड होने में मोर एक्यूरेटली, सही तरीके से, एट एनी पर्टिकुलर ब्लड वेसल, किसी भी पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स के लिए. एंड let's see here, this is the duplex images of internal carotid artery, and here we can see that on the left is the Doppler shift, left side the Doppler shift, and here we can see this is our carotid artery, and this is the peak systolic velocity, and this is the end diastolic velocity. Here we can see this is the Doppler sample volume, and this is, here we can see Doppler ultrasound line of sight जिसको हम लोग देख सकते हैं. And spectrum indicate pulse, and now here we can study spectrum indicating pulsatile flow towards the transducer. If the flow was away from the transducer, the spectrum would be out upside down, and the line is wavy because the blood velocity changes during the heart cycle. हार्ट साइकिल के दौरान जो ब्लड वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं वो देख सकते हैं. ऑन द राइट इज ए बी मोड इमेज शोइंग वेयर द ब्लड फ्लो इज बीइंग रिकॉर्डेड, और ये दिखाता है जहाँ के ब्लड फ्लो रिकॉर्ड हो रहा है.
and this is, if the scanning angle is not correct the result can be misleading. अगर जो स्कैनिंग एंगल है करेक्ट नहीं है तो इससे हम लोग की स्कैनिंग जो इंफॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग भी हो सकती है. दिस इज़ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऑफ द पेशेंट सोन बट scanned at an angle of nearly 90 degree. As a result of the flow appears disturbed while it was in fact quite normal. The angle is wrong, not the blood flow. So from here we can know the scanning angle should also be correct. And now wave propagation. Wave propagation describes the transmission and spread of USG waves different tissues to different tissues. The differences in the ways in which ultrasound interacts with tissues influence the design of an ultrasound units, affect the interpretation of the images and impose limitation on the usefulness of the method. सो वेव प्रोपगेशन क्या होती है, डिस्क्राइब करती है ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स को टू द डिफरेंट टिश्यूज एंड द डिफरेंसेस इन द वेव्स, इन जो डिफरेंसेस होते हैं वेव्स में इन विच अल्ट्रासाउंड इंटरेक्ट्स विद द टिश्यूज़ के साथ जैसे इंटरेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है द डिज़ाइन ऑफ एन अल्ट्रासाउंड यूनिट की को एंड अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इमेजेस, और जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन ऑफ द इमेजेस का इफेक्ट होता है एंड इम्पोज लिमिटेशंस ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ द मेथड. ये यूनिट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसी है, उसके हिसाब से लिमिटेड होता है इमेजेस की क्वालिटी. एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोपागेट एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन सॉफ्ट टिश्यूज़. जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं प्रोपोगेट होती हैं एज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के हिसाब से सॉफ्ट टिश्यूज़ में. एंड द मोलिक्यूल्स वाइब्रेट एंड डिलीवर एनर्जी टू ईच अदर सो दैट अल्ट्रासाउंड एनर्जी प्रोपेगेट्स थ्रू द बॉडी. एंड जो मोलिक्यूल्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं, डिलीवर करते हैं एनर्जी को to each other so that ultrasound energy propagates through the body, ताकि अल्ट्रासाउंड की जो एनर्जी है प्रोपागेट हो थ्रू द बॉडी. एंड द एवरेज प्रोपागेशन स्पीड फॉर सॉफ्ट टिश्यूज इज 1540 मीटर पर सेकेंड. जो एवरेज स्पीड होती है प्रोपागेशन स्पीड ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज होती है कितनी, 1540 मीटर पर सेकेंड. सो here is soft tissues and bones, how this interacts with the tissues. So here we can see in the soft tissue the propagation speed is 1540 meter per second, while in the bones this becomes 4620 meter per second because of the density of the tissue. So this is how the propagation speed differences. And now let's see wavelength. The wavelength of ultrasound is inversely proportional to its frequency. Obviously we know that wavelength is always inversely proportional to the frequency. And the higher the frequency, जितनी ज़्यादा frequency ज़्यादा होगी the shorter will be the wavelength. wavelength उतनी ही कम होगी. For example, ultrasound of 3 megahertz has a wavelength of 0.5 mm in soft tissues, whereas ultrasound of 6 megahertz has a wavelength of 0.25 millimeter. The shorter the wavelength the better the resolution. wavelength जितना कम होगा उतना ही better resolution would be provided and giving a clearer image, और उससे clear image provide होगी and more details of on the screen. उसी हिसाब से स्क्रीन में ज़्यादा से ज़्यादा better image provide होगी. And however wavelength also affects the way in which the waves go through the tissues. and ये वेवलेंथ जो होती है ये वेव्स को
किस तरीके से जा रही हैं वे को भी अफेक्ट करती हैं, एटेन्यूएशन को। Obviously, if the wavelength would be higher, then the frequency would be lower. If the frequency would be lower, then it would be unable to penetrate tissue. Okay, now here we can see this is a comparing between the tissue's wavelength and frequency. Here we can see 3 megahertz wavelength 0.5 millimeter, and here is the 6 megahertz and wavelength is the 2.25 millimeter. So this is how it differences, and wavelength is always inversely proportional to the frequency. Now focusing. So ultrasound waves can be focused either by lenses and mirrors or electronically in composite transducer. जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं ये कैन बी फोकस्ड की जा सकती हैं बाय लेंसेज एंड मिरर्स और इलेक्ट्रॉनिकली इन कंपोजिट ट्रांसड्यूसर्स, इन कंपोजिट ट्रांसड्यूसर्स में, in the same way that a thin beam of light shows an object more clearly than a widely scattered unfocused beam. उसी तरीके से सेम तरीके से जैसे कि एक थिन वेव होती है लाइट की, शोज एन ऑब्जेक्ट जो कि दिखाती है ऑब्जेक्ट को मोर क्लियरली देन ए वाइडली स्कैटर्ड, क्लियरली दिखाती है दैन दी वाइडली स्कैटर्ड अनफोकस्ड बीम की तरह. सो विद द फोकस्ड अल्ट्रासाउंड ए नैरो बीम इमेजेस ए थिन सेक्शन ऑफ टिश्यू एंड दस गिव्स बेटर डिटेल्स. जब एक फोकस्ड बीम होगी वेदर इट इज नैरो it would provide a better picture, while we are giving a thickened beam but there is unfocusing, this would not provide a better picture. For best results it is necessary to focus at the depth in the body. फॉर बेस्ट रिजल्ट ये ज़रूरी होता है कि फोकस होना चाहिए एट द डेप्थ इन द बॉडी that it is most relevance to the particular clinical problem, ताकि ये most relevance हो to the particular clinical problems. For general purpose scanners this usually means using different transducers for different purposes. For general purposes के लिए scanners होते हैं usually means यूजिंग डिफरेंट ट्रांसड्यूसर, जो कि यूज करते हैं डिफरेंट ट्रांसड्यूसर्स को फॉर डिफरेंट पर्पजेस के लिए, एंड एडजस्टिंग द फोकल जो कि एडजस्ट करते हैं फोकल जोन को ऑन द यूनिट एज नेसेसरी, ऑन द यूनिट एज इट इज नेसेसरी. ओके, एंड दिस इज हाउ वी कैन सी focused and unfocused. If beam would not be focused, this would provide a hazy image, and if the beam is focused, then this would provide a sharp image, clear image, whether it is narrow focused beam. So this is how it is. The center of this image is in focus while the periphery is not. In this image center is in the focus. Diaphragm, here is the diaphragm, liver and areas of the best focus. This is the areas of the best focus. So variable focus. Many transducers have a fixed focus. कई सारे ट्रांसड्यूसर फिक्स्ड फोकस होता है. कंपोजिट ट्रांसड्यूसर सच एज लीनियर एंड
convex array and annular sector transducers। जैसे कि कुछ लीनियर होते हैं, कॉन्वेक्स एरे होते हैं और एन्यूलर सेक्टर ट्रांसड्यूसर्स भी होते हैं। हैव एन इलेक्ट्रॉनिकली वेरिएबल फोकल लेंथ, इन सब में इलेक्ट्रॉनिकली वेरिएबल फोकल लेंथ होती है विच कैन बी एडजस्टेड टू रिक्वायर्ड डेप्थ, जो कि एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेप्थ। हाउएवर मोस्ट ट्रांसड्यूसर्स हैव ए फिक्स्ड focal distances in at least one place. Only annular array sector transducers have an adjustable electronic focus in all planes, जो कि annular array होता है sector transducer. This can only be adjustable electronic focus in all planes. Well adjusted focusing provides a narrow acoustic beam, जो वेल एडजस्टेड फोकसिंग होती है प्रोवाइड करती है एक नैरो acoustic beam and a thinner image sections. This gives better resolution of details and a clearer picture with more information, or a clear picture with the more information. And now attenuation. Tissues in the body absorb and scatter ultrasound in different ways. Higher frequencies are more readily absorbed and scattered, attenuated than lower frequency. जो हायर फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाती है और स्कैटर्ड भी हो जाती हैं देन द lower frequencies. Thus, to reach deeper tissues, it is necessary to use lower frequencies because the waves are less likely to be diverted as they transverse intervening structure. तो जो डीपर टिश्यूज़ पर पहुँचने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ लोअर फ्रिक्वेंसीज बिकॉज द वेव्स आर लेस लाइकली टू बी डाइवर्टेड, क्योंकि ये वेव्स होती हैं कम डाइवर्ट होती हैं एंड दे ट्रांसवर्स इंटरवेनिंग स्ट्रक्चर, और ये जो इंटरवेनिंग स्ट्रक्चर्स को ट्रांसफ़र करती हैं। इन प्रैक्टिस इट इज़ बेटर टू यूज़ अबाउट 3.5 मेगाहर्ट्ज़ for deep scanning in adults and 5 megahertz or higher if available for scanning the thinner bodies of children. तो जो हम लोग यूज करते हैं एडल्ट्स में 3.5 मेगाहर्ट्ज़ होना चाहिए एंड 5 मेगाहर्ट्ज़ और हायर इफ़ अवेलेबल फॉर स्कैनिंग द थिनर बॉडीज़ ऑफ चिल्ड्रन। जो थिनर बॉडीज़ हैं चिल्ड्रन की उसमें यूज करते हैं। एंड 5 मेगाहर्ट्ज़ और ग्रेटर इज ऑल्सो बेस्ट फॉर स्कैनिंग सुपरफिशियल ऑर्गन्स इन एडल्ट। जो एडल्ट्स में 5 मेगाहर्ट्ज़ और ग्रेटर इज ऑल्सो बेस्ट फॉर स्कैनिंग होता है। सो हियर वी कैन सी इन एडल्ट्स वी आर यूजिंग 3.5 मेगाहर्ट्ज़ एंड चाइल्ड में वी आर यूजिंग 5 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसड्यूसर। And here we can see transducer shape is also changing, and now this is how it works. Here we can see the 5 megahertz have more attenuation because it comes absorbs and discretes more faster than the lower frequency pulses, and high frequencies have better resolution but less depth. Low frequencies penetrate better but have less resolution. These are the differences between higher and lower frequency. So high frequency shows more details but less penetrating. Now amplification. The echoes that return from deeper structures are not as strong as those that come from the tissues nearer
द सरफेस। जो इकोज होती हैं दैट रिटर्न करती हैं फ्रॉम द डीपर स्ट्रक्चर आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दोज दैट कम फ्रॉम टिश्यूज नियरर द सरफेस। दे मस्ट therefore be amplified and in the ultrasound units. This is done by the time again compensation. ये जो किया जाता है by the time again compensation, time gain compensation amplifier, time gain compensation amplifier के द्वारा. In all ultrasound units it is possible to vary the degree of amplification. का जो डिग्री है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं to compensate for ultrasound attenuation in any part of the body and improve the quality of the final image. और जिससे कि क्वालिटी होती है फाइनल इमेज की इम्प्रूव की जा सकती है. And here we can see the amplification. On the left the far gain is too low and no echoes have returned from the deeper tissue. On the right the gain has corrected and returning from echoes are equal strength throughout. And now boundaries. And if we are seeing boundaries, ultrasound may be reflected or refracted when it meets the boundary between two different types of tissues. अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं में भी रिफ्लेक्ट हो सकती हैं और रिफ्रैक्ट होती हैं या बेंट होती हैं व्हेन इट मीट्स बाउंड्रीज बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. जब ये दो डिफरेंट टाइप्स की टिश्यूज़ की बाउंड्री में मिलती हैं. रिफ्लेक्शन means the waves are thrown back and refraction means they change in direction and are not necessarily reflected. और रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं but they change their direction. And here we can see this is the reflection, they come and go back, and this is the refraction, they come to the tissue and there is the boundary of the another tissue, so they just change their path. Okay, tissues are greatly in their effect on ultrasound. जो tissues होते हैं greatly in their effect on ultrasound. For example, the skeleton and gas in the bowel or chest behave very differently from soft tissue. जो skeleton होता है, bowel में gas होती है, chest, ये behave करते हैं differently from soft tissues. When ultrasound waves meet bone or gas in the body, they are significantly reflected and refracted. Thus, it is usually impossible to use ultrasound effectively when there is a lot of gas in the bowel. When examining the pelvis, the urinary bladder should be as full as possible to lift the intestine of the way. जिससे कि इंटेस्टाइन होती है उसको लिफ्ट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एयर. जिससे कि जो इंटेस्टाइनल वावल गैस होती है उसको लिफ्ट किया जा सके बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एयर. द नॉर्मल lungs cannot be examined at all by ultrasound. जो normal lungs cannot be examined at all by the ultrasound, but pleural fluid or a mass in contact with the chest wall can be imaged. लेकिन एयर की वजह से लंग्स को एग्जामिन नहीं किया जा सकता, बट फ्लूरल फ्लूइड को या फिर मास जो कि कांटेक्ट में होता है चेस्ट वॉल के कैन बी इमेज्ड in the ultrasound. And the skeleton reflects ultrasound so strongly that
The architecture within a bone or heavily calcified tissues cannot be seen, and there is an acoustic shadow behind it. जो स्केल्टन होती है रिफ्लेक्ट करती है अल्ट्रासाउंड को so strongly that the architecture within the bone or heavily calcified tissue cannot be seen, जिससे कि टिश्यूज नहीं देखे जा सकते हैं, एंड देयर इज एन अकॉस्टिक शैडो बिहाइंड इट एज ए रिजल्ट इमेजिंग थ्रू एन एडल्ट स्कल और अदर बोन्स इज नॉट पॉसिबल इन द अल्ट्रासाउंड. Here we can see to transverse scan through a fetus showing shadows caused by the fetal spine. Similar shadows below ribs may obscure parts of the kidney or liver. Changing the angle of the scan will alter the position of a shadow so that underlying tissues can be seen clearly. While we will change the position, then the image can be seen clearly. And now refraction. A refraction of the incident waves is a refraction of the incident wave is reflected at an angle equal to the angle of the incidence. Another fraction passes across the interface and is refracted continuing at the angle that is different from the angle of the incidence, जो कि डिफरेंस होता है फ्रॉम द एंगल ऑफ इंसिडेंस. द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द करेक्टरिस्टिक अकॉस्टिक, जो ग्रेटर डिफरेंस होता है बिटवीन द करेक्टरिस्टिक अकॉस्टिक इम्पीडेंसेस, द ग्रेटर द फ्रैक्शन विच इज रिफ्लेक्टेड. सो द ग्रेटर द रेशियो ऑफ द प्रोपगेशन, जितना ज़्यादा रेशियो प्रोपगेशन का ज़्यादा होगा द ग्रेटर द रिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. इन प्रैक्टिस दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज जीरो, जब इंसिडेंट एंगल जीरो होता है एंड द अल्ट्रासाउंड वेव्स स्ट्राइक्स द इंटरफेस परपेंडिकुलरली. तो अल्ट्रासाउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं परपेंडिकुलरली. इफ द रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री इज मच वाइडर देन द वेवलेंथ, जो रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री होती है मच वाइडर होती है देन द वेवलेंथ, like 10 to 20 times wider, it acts like a mirror and is called a specular reflector. अगर रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री मच वाइडर होती है देन द वेवलेंथ से, तब ये एक्ट करती है एज ए मिरर, देन इट इज़ कॉल्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. And the fetal skull, the diaphragm and the wall of the vessels and connective tissues are examples of specular reflectors. So specular reflectors क्या होते हैं? Fetal skull, the diaphragm, the walls of the vessels and the connective tissues of the examples. Okay, now ultrasound waves scatter when the width of the reflectors is smaller. अल्ट्रासाउंड वेव्स स्कैटर होती है when the चौड़ाई जो होती है रिफ्लेक्टर्स की स्कैटरर्स की स्मॉलर होती है than the wavelength of the अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड की वेव से स्मॉलर होती है. Only a small fraction of the ultrasound waves is scattered back in the original direction. एक small fraction होता है of the ultrasound waves is scattered back in the original direction. The liver and the kidney parenchyma are examples of scattering media. जो liver और kidney होती हैं example होते हैं parenchyma के in the scattering medium. So now here we can see angle of reflection, angle of incident angle, and this is the interface, and here this is the interference, this is the reflection. Okay, and these are the scatterers. Scattered waves and incident waves.
These are the sagittal liver scan. There is a strong specular reflection from the diaphragm, which is such a strong reflector that the image of the liver is repeated behind it, and the ultrasound waves travel across the liver, first at transmission, again after being reflected from the diaphragm, when again from the tissue interfaces. Here we can see the liver and diaphragm and mirror of the image of diaphragm. Here is the, so now it is because of the boundary effect that a coupling agent must be used for scanning. जब बाउंड्री इफेक्ट आता है इसकी वजह से हम लोग को एक कपलिंग इफेक्ट यूज करना पड़ता है, जिससे कि ये बाउंड्री को टू प्रिवेंट एयर ट्रैप्ड बिटवीन द स्किन एंड द ट्रांसड्यूसर, जिससे कि एयर को प्रिवेंट किया जा सके जो कि ट्रैप्ड है बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड द स्किन, विच एक्टिंग एज ए बैरियर टू द अल्ट्रासाउंड वेव्स, जो कि एक्ट करती है एज ए बैरियर टू द अल्ट्रासाउंड. दिस इज वाई वी आर यूजिंग जेली. We have gone to the ultrasound and we have seen jelly, so this is why we use jelly during ultrasound, because to prevent air trapped between the skin and the transducer. Okay, and now transducer scanning proofs. So we will study from here in the next video. Today's video become very long, so we will study this in the another part of this video. Okay, so thank you. Like, share and subscribe. Please subscribe and share to your friends. Bye bye. See you soon in the next part of this video. Bye bye.